एपिलेप्सी बा अपस्मार विशेष भाव में यह वयस्कों तुलन में छोट पिलामानंकठारे बेसी देखा जाए। एपिलेप्सी को नहीं सचेतनता निहाती आवश्यक। प्रतिवर्ष नवेम्बर मास को अपस्मार सचेतनता मास भाव में पालन करा जाउथिबा बेले भारत प्रतिवर्ष 17 नवेम्बर को जातीय एपिलेप्सी सचेतनता दिवस पालन करिथाय। ए अवसर में हाईटेक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिसर में शिशु स्नायु विज्ञान एकाडेमी ओडिशार मिलित आनुकूल्य एपिलेप्सी सचेतनता दिवस पालन करा जायछि। ए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भावे हाईटेक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अध्यक्ष डॉक्टर राधामाधव त्रिपाठी, उपाध्यक्षा डॉक्टर लिसा षडंगी योगदान करथिबा बेले मुख्य वक्ता भावे डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सस्मिता देवी अग्रवाल एवं पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजित मनोकरन योगदान करी छोट पिलामानंकु जदि हठात बात मारुछि तेबे प्रथम पर्यायर किभଳି यार प्राथमिक चिकित्सा कराइबा एवं बात रोग को किभଳି नियंत्रण रे रखिहेब से विषय बुझाइथिले। अन्यपटे सम्मानित अतिथि भावे डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी प्रोफेसर डॉक्टर बसंत कुमार अग्रवाल उपस्थित थिबा सह एथिरे पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट रो बहु छात्र छात्री योगदान करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट HMTV ओडिया। So as a pediatric neurologist, as a pediatrician, pediatric neurologist, it is my responsibility to create the awareness so that we can treat the patient properly, we can manage the patient, how to manage the patient out of the hospital, घरे कौन कौन करी परिवे। आजिकली पेशेंट माने जदि छुआटा को बात मारिला ताले ताकू देखि कि से डरी होजंती कि कौन करिवे ता ऊपर ठंडा पानी पकाउचंती ताकू धरिया पे चेष्टा करूचंती ता हाथ रे किछि जिंस दवा पे चेष्टा करूचंती ने आमे आजि जो अवेयरनेस प्रोग्राम टा कलु आमे सेठी कहूचु कि ए जिंस गुडा करबा दरकार नै। आपण शांत हे कि रहंतु, बुझंतु कि एटा एपिलेप्सी अछि, एटा ट्रीटेबल कंडीशन अछि आ रेस्क्यू मेडिसिन आजिकल हम पाखरे अवेलेबल अछि। जदि छुआटा को बात मारिला प्रथमे आमे ताकू गोटे रिकवरी पोजीशन अछि, रिकवरी पोजीशन रे रखि दबा। तापर जदि से 3 मिनिट माने बेसी समय प्रोलॉन्ग कला सीजरटा ताहले हम पाखरे रेस्क्यू मेडिसिन अवेलेबल अछि। नाजल स्प्रे ताकू देई कि ना प्रॉपर माने अपराइट पोजीशन छुआटा टिके बसै कि नाजल स्प्रे देला परे ताकू पूर्ण रिकवरी पोजीशन रे रखि दबा हैला। तो आज हमरो जो आमे एठी नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करलु to create the awareness that it is a treatable condition and to remove the stigma जो patient पूरा life long गोटे छुआटा को भी माने स्कूल रे भी अन्य माने स्कूल रे होंतु किबा बाहर जो गोटे कहि दउचंत कि यार एपिलेप्सी अछि तास त खेलिबनी से जिंसटा को हमको रोकिया पे पड़िबो कि एटा तो कंटेजियस नाही कि या पाखरु ता पाखु पळैला हैला। जदि हमें प्रॉपर्ली डायग्नोसिस करि परले एट अर्लीएस्ट एज पॉसिबल एंड ताको प्रॉपर ट्रीटमेंट देई परिले इन मोस्ट इंस्टेंसेस मु एटा को स्ट्रेस देगी कहया पे चाहूँगी इन मोस्ट इंस्टेंसेस इट इज ए ट्रीटेबल कंडीशन एंड आमे जदि प्रॉपर ताकू ट्रीट करि परिबा डेफिनेटली द प्रोग्नोसिस इज गुड। आमर दायित्व हैला टू रिमूव द स्टिग्मा एंड टू क्रिएट द अवेयरनेस दैट इट इज ए ट्रीटेबल कंडीशन हैला। एंड आमर जो रेस्क्यू मेडिकेशन अछि ताकू भी आमे पेरेंट्स को भल भाव में शिखै देबा कि जेते बेले भी फिट्स मारुची छुआटा को आमे घरे घरे कोन कोन करि परिबा। ठीक अछि, थैंक यू वेरी मच। Yeah, I am Dr. Ranjit. I am a pediatric neurologist and epileptologist coming from Chennai. Thanks to Dr. Shashmita for inviting me for this National Epilepsy Awareness Day program at HITEC Medical College. So, as Madam has told, epilepsy is a very common condition in children and in adults. It's as common like 0.5 to 1%. That means if you go to a school or a classroom with 100 students, there may be one child who may be epileptic. Whether that school or the family is aware of that is a different situation. So it's a very common, and epilepsy has a lot of social, economic implications. Like it affects the whole social structure of the family, and also it affects a lot of economic implications because the drugs are costly, the treatment is expensive. So if we identify epilepsy early and if we identify the proper cause early, and if the patient comes to a child neurologist if available in the nearby setup, and that can be very well managed, and the patient can often be kind of cured of epilepsy over 2 to 3 years, and then medicine can be taken off after 2 to 3 years, and then they can lead their life rest of the life normally. In a small proportion of children,
medicines may not be enough to control the seizures. They may get seizures in spite of medicines. In that special category of situations, we as neurologists, as pediatric neurologists, refer them to what is called as epilepsy centers, where some specialized procedures are available to find out the next line treatment options for them. Some of the options I want to use this opportunity to highlight is option like ketogenic diet, and there is an option called even epilepsy surgery, which is a form of surgery performed on brain for select candidates with epilepsy, which can help them cure the epilepsy. So even if the patient is not controlled with medicines, there is no loss of hope. There is still hope, and we can evaluate and we can find out next line options. So the ultimate message or theme of this year's epilepsy awareness program is stigma. So epilepsy is not a disease which need to be stigmatized, and we are here to empower the patients and the families to lead a normal life with even with epilepsy.